Hey guys, it's me Prey and today's word of the day is as regards. As regards. It's less word, more of a phrase. It means in regard to or with respect to. So when you want to introduce or specify a subject or topic that is being discussed, then you use this phrase. It is so that you can indicate the particular aspect or context of a matter, such as regards the upcoming party, we need to finalize the guest list. What are we saying? We are saying in regards to the upcoming party, we have to finalize the guest list. So, as regards, in regards to, or with respect to. And that's it for English meaning. Now I'm going to give you Urdu meaning. If you want to stay for that, please do. If not, that's it for you. Bye. Alright guys, as regards जो है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है जहाँ तक के ताल्लुक है. हम कहते हैं ना जहाँ तक के ताल्लुक है इस चीज़ का, तो वो चीज़ कहने के लिए इंग्लिश में जहाँ तक के ताल्लुक है तो नहीं कह सकते, तो आप कहोगे एज रिगार्ड्स. जैसे कि एज रिगार्ड्स द अपकमिंग पार्टी वी नीड टू फाइनलाइज द गेस्ट लिस्ट. जहाँ तक के ताल्लुक है अभी आने वाली होने वाली पार्टी का, हमें गेस्ट लिस्ट मेहमानों की लिस्ट फाइनलाइज करनी है. ऑलराइट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर लगी तो गिव इट अ थम्स अप. You can support me by buying me a coffee. Link is in the description box. Bye.